Student, today our topic is sulfonamide. It is a class of antibiotic that contain a sulfonamide group. तो सल्फोनामाइड ग्रुप क्या होता है? SO2 NH2 ग्रुप को हम सल्फोनामाइड ग्रुप कहते हैं. इन देयर केमिकल स्ट्रक्चर दे आर सिंथेटिक बैक्टीरियोस्टैटिक antibiotic, meaning they inhibit the growth and reproduction of bacteria. And structure, the basic structure of sulfonamide consists of an aromatic ring. तो हमारे पास जो सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर उसमें एरोमेटिक रिंग होगी कनेक्टेड टू आ सल्फोनामाइड ग्रुप, मतलब कि एक एरोमेटिक रिंग है वो कनेक्ट होगी हमारे पास SO2 NH2 के साथ. द एरोमेटिक रिंग कैन बी सब्सटीट्यूटेड विद डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स टू मॉडिफाई द एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड. The structure activity relationship of sulfonamide involves modifying different parts of overall structure to optimize the antibacterial activity. Some important factor influencing the activity includes, तो first factor है aromatic ring. Different substituent on the aromatic ring can affect the lipophilicity and electronic parameter of the molecule, changing its activity. Second है sulfonamide group. It is essential for antibacterial activity. Modifying the sulfonamide group can influence the compound's solubility, stability and ability to bind the bacterial enzyme target. ठीक है. And third one है substituents on the aromatic ring. The type, position and number of substituent on the aromatic ring can impact the compound's activity. For example, electron withdrawing groups can enhance the antibacterial activity. Then its mode of action. Sulfonamide work by inhibiting the synthesis of folic acid in bacteria. They competitively inhibit the enzyme dihydropetroate synthase, which is responsible for catalyzing the reaction required for folic acid production. By blocking this enzyme, sulfonamide prevents the bacteria from synthesizing the folic acid and essential component for DNA and protein synthesis. This inhibits the bacterial growth and reproduction, ultimately leading to their death. तो ये हमारे पास इसका डायग्राम है. ठीक है, या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं. एंड दिस इज़ आवर एरोमेटिक रिंग जो हमने डिस्कस किया था, और इसके साथ हमारे पास क्या है? SO2 NH2 ग्रुप अटैच्ड है. ठीक है. And next is sulfonamide inhibition and probable mechanism of bacterial resistance to sulfonamide. It is also known as sulfa drugs, a class of antimicrobial agent that inhibit the growth of bacteria. ठीक है. They work by targeting the folic acid synthesis pathway in bacteria, specifically inhibiting the enzyme dihydropetroate synthase, जिसको हम DHPS भी कहते हैं. This enzyme is necessary for the synthesis of tetrahydrofolic acid, which is precursor for the production of nucleic acid in bacteria. While sulfonamide have been widely used in the past of the treatment of bacterial infections, bacterial resistance and these drugs has emerged. There are several probable mechanisms by which bacteria can develop resistance to sulfonamide. And second है mutation in the DHPS gene, जो हमारे पास क्या है? डाइहाइड्रोपेट्रोएट सिंथेस जीन में क्या क्या म्यूटेशन आई है? तो बैक्टीरिया कैन एक्वायर म्यूटेशन इन दी DHPS जीन दैट अल्टर द टारगेट एंजाइम बाइंडिंग एफिनिटी फॉर सल्फोनामाइड, thus reducing its inhibitory effect. ठीक है. These mutations can confer the resistance to specific sulfonamide drugs or even cross resistance to multiple drugs within the class. एंड सेकेंड है हमारे पास इसका मैकेनिज्म, ओवर प्रोडक्शन ऑफ PABA. ठीक है. तो सल्फोनामाइड वर्क बाय कंपीटिंग विथ पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं? PABA बोलते हैं. ठीक है. अ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल इन दी फॉलिक एसिड सिंथेसिस पाथवे. सम बैक्टीरिया कैन overcome sulfonamide inhibiting by increasing the production of PABA, thereby circumventing the drug's effect. थर्ड है हमारे पास इंक्रीज द एफ्लक्स पम्प्स. तो बैक्टीरिया कैन डेवलप इफ्लक्स पम्प्स मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दैट एक्टिवली पम्प आउट ड्रग फ्रॉम द बैक्टीरिया सेल, रिड्यूसिंग देयर कंसंट्रेशन एंड इफेक्टिवनेस. एंड फोर्थ है हमारे पास सल्फोनामाइड टारगेट बाईपास.
Some bacteria can require alternative enzymes or pathway that can bypass DHPS altogether, rendering sulfonamide ineffective. ठीक है, and these alternative enzymes may be less sensitive to sulfonamide or utilize different precursor for folic acid synthesis. फिफ्थ है हमारे पास horizontal gene transfer. Bacterial resistance to sulfonamide can also occur through the transfer of resistance gene between different bacterial species.